Assalamualaikum everyone, I'm your host Vidish Arzu. Welcome to Career Camp. आज के जो गेस्ट हैं एंड यू हैव टू गेस हु इज इट, ठीक है. आई एम सो ऑनर्ड टू डू दिस इंटरव्यू. ये सब बनाया गया है नय्यर अली दादा साहब के थ्रू. तो माशाल्लाह आई एम ऑनर्ड कि मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ आज. आई नेवर थॉट दैट आई कैन इवन मीट हिम, लेट अलोन इंटरव्यू हिम. सो लेट्स वेलकम हिम. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली सच एन ऑनर, क्योंकि जब बीइंग फ्रॉम द डिज़ाइन फील्ड और जब मैं इंटर के बाद व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग टू गेट एडमिटेड इन अ डिज़ाइन यूनिवर्सिटी या आर्ट्स यूनिवर्सिटी, और हम जब पढ़ रहे थे एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे थे एंड एवरीथिंग, सो योर नेम वाज वन ऑफ द टॉप डिज़ाइनर्स नेम जिनका हम पढ़ते थे और उनका काम देखते थे. और आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं रास्ते में जा रही होती थी तो आई यूज़ टू नोटिस दोज बिल्डिंग्स कि इन बिल्डिंग्स ये जो है ये पाकिस्तानी आर्किटेक्चर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बिल्डिंग्स है जैसे वापडा हाउस जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के थ्रू भी बना हुए हैं कुछ. जी सॉरी, अमेरिकन आर्किटेक्ट्स. तो ये जानना कि यहाँ के कोई ऐसा बंदा कि जो माशाल्लाह ऊपर जा रहे हैं और हमारा आर्किटेक्चर पहचाना जा रहा है, इट्स सच एन ऑनर कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन हो गई है पाकिस्तानी आर्टिस्ट की. सो मैं आपसे सबसे पहले यही चीज़ पूछूंगी कि सक्सेस माशाल्लाह नॉट एवरीवन इज़, सबको नहीं मिलती है सक्सेस. तो सक्सेस का हार्ड वर्क के साथ कितना ज़्यादा लिंक है? दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है सक्सेस में. लक आल्सो मैटर्स, बट इट्स बेसिकली हार्ड वर्क सही दैट मेक्स यू रीच एनीवेयर. It's not just a matter of luck. You have to work very hard, particularly in our circumstances, where from the olden time, from 60s, these fields were not really very well established, like design fields, field of architecture, interior design and product design. All these were there, but not really recognized and not established. As careers, they were not accepted to be, careers where you could get good employment or you could get good business. So actually the work was very hard initially. Now, by the grace of God, all these professions are very well established. And people who did painting and did pure arts, they didn't have any guarantee of getting into good careers. But now the artists are very well employed, especially in advertising, in designing of documentaries, and in all the other creative fields. There is a lot of movement, and there is a lot being done and being recognized. सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है. और एक और चीज़, मतलब जैसे कि माशाल्लाह आप लोगों को जिस तरह से वो फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ी है, दैट वाज एन एक्स्ट्रा एफर्ट जो आप लोगों को अपने पार्ट पे करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो फाउंडेशन बनी नहीं हुई थी ना. और अब एटलीस्ट जो अब आ रहे हैं ग्रेजुएट्स, अब जो आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड में आ रहे हैं, आप लोगों की हेल्प से उनके पास वो फाउंडेशन है. तो ये जो चीज़ है, आप क्या ये ज़्यादा वीक बना रहा है बच्चों को, या फिर उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए? हाउ शुड दे एक्चुअली टेक दैट और उसको बेनिफिशियल बनाएं अपने करियर के लिए?
उनको असल में you see, the quality of life is one, and the enterprise around you, the development in the country, इन दोनों में contribution है of new entrants, and we need to see that there is employment for all the subjects which we are teaching, and for that there are two sides of everything. One is the qualitative part of it, where you intellectually grow yourself and contribute in the system. The other is the economy of the country, and you make money for yourself, and then you also contribute in the well-being and progress of the country. So there are two sides of it. One is an intellectual side of it, the other is material side of it. If you follow one, I think it's not enough if you can balance between the two. That makes a good dimension to both of them. सही, तो मतलब हमें इंटेलेक्चुअल एक तो होता है वो डिज़ाइन और वो सारा, और फिर एप्लीकेशन और उसकी वो जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं उन पे भी फोकस उतना ही होना चाहिए. सर मैं आपसे ये पूछूंगी कि माशाल्लाह जो आपका तो माशाल्लाह एक नाम बन गया, और अब जो लोग आ रहे हैं और आर्ट एंड डिज़ाइन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी आ गई है, बट वन प्रॉब्लम दैट एवरीवन फेसेस कि डिज़ाइन फील्ड में पीपल आर नॉट विलिंग टू पे फॉर डिज़ाइन सर्विसेज. तो क्यों पे करना चाहिए डिज़ाइन सर्विसेज के लिए? जैसे बाकी किसी भी सर्विस के लिए पे किया जाता है, तो डिज़ाइन के लिए पे करना क्यों ज़रूरी है? वो किस तरह से वैल्यू ऐड करता है? मतलब दिस इज़ अ वैल्यू एडिशनल सर्विस ना जो हम देते हैं. तो ये हम किस तरह लोगों को समझाएंगे दिस इज़ अ प्रॉपर करियर एंड यू हैव टू पे फॉर दिस सर्विस एंड दिस एड्स सम वैल्यू टू देयर लाइफ. That's right. That you can see in the creative fields, the value is definitely added by a good design. But sadly, we have an environment where design is considered not to be taken as an original statement. People do a lot of copied work, and the designs which are already floating, they pick that up and use it, which is not a very nice attitude, because one, it doesn't promote original design flourish, and the other is in Pakistan there are no copyrights. The laws are there but they're not practiced, so we need to establish that. But the designers have done well now, and they have got their value established by doing such good work. Like you can see in fashion design, the brand name says why. Yeah. Because the design is being appreciated and being paid for. True. So following that response, आपका एक I had a question कि आप जैसे आप देखते हैं, हम जाते हैं गली मोहल्लों में, नई सोसाइटीज़ जो स्पेशली बन रही हैं, everyone is following one particular design. वो स्पेनिश विलास एकदम फेमस हो जाते हैं, फिर कोई और फेमस हो जाता है and everything. वो चीज़ कोई एक कैरेक्टर नहीं बनने देती घर का. एक होता है ना आप अपनी पसंद का बनाते हो एंड यू गेट डिज़ाइंड पर्सनल, उसमें आपकी अटैचमेंट होती है और उसका एक कैरेक्टर होता है घर का. जब आप सारे एक जैसे देखते हो तो उस चीज़ को कैसे? Especially in third world countries, there is always fads and trends. They prevail everywhere, and original work is rare because mostly the trends are followed. And it's not a very healthy thing, because design requires a solution of a particular product or a problem or a program that is required, and one needs to do work around it for local conditions, for local consumption, rather than using European designs everywhere or Chinese material and equipment is being consumed everywhere without seeing its suitability to our demands, our conditions or our culture. Exactly, bilkul. So for our own culture, if we want to
serve it properly. Our conditions, we have to do our own work, we have to do our own research and bring our own findings forward. ट्रू, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और वहीं पे रोल एक अदा होता है ना एक डिज़ाइनर का और एक क्राफ्ट्समैन का. एक और चीज़ व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क इज़ कि आप जब पढ़ रहे थे, इफ़ वी गो बैक इनटू दैट, कि तो आपका जो बिल्कुल NCA का स्टार्ट था और फैकल्टी जो बाहर से आई थी, US UK, मतलब यू नेम इट, तो वो जब आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ से आते हो एंड व्हेन यू टीच समवन, सो एवरीवन ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट टू द टेबल. तो उस पर आपका क्या कहना है? नाउ मतलब मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इज़ फ्रॉम हेयर, उन्होंने एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ा होता है और हार्डली वो एक साल ही कहीं पे काम करते हैं और वो उस इंस्टीट्यूट का पार्ट बन जाते हैं फैकल्टी पे, विदाउट यू नो गोइंग इनटू द इंडस्ट्री और प्रैक्टिकल काम किए बगैर ही. तो इसकी क्या अहमियत है कि आप प्रॉपर इंडस्ट्री में जाओ और यू गेट सम एक्सपीरियंस, देन यू कम बैक एंड टीच स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स? Teaching actually is academic field, is a specialized area where academics must be strong, but experience is very important. That in developed countries like US, we have seen that full-time teachers are mostly academics, but part-time contribution comes from senior professionals. They come and deliver their own experience, so it becomes a combination of academics and professional experience, which is required. And a lot of research takes place in all the areas which sadly we do not have here. दैट इज़ सो ट्रू. और इतना ये अच्छा मतलब आपका रिस्पॉन्स था इस पे, ओपिनियन. मैं एक और चीज़ पूछूंगी कि इसी में जब हम आप कहते हैं कि प्रोफेशनल्स आते हैं, दे गिव देयर पार्ट, मतलब पार्ट टाइम देते हैं और कुछ हिस्सा अपना दे देते हैं, तो जो फैकल्टी है जो फुल टाइम एकेडमिक है, वो उनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है? दैट इज़ ओके, वो सिर्फ एकेडमिक पे ही गौर करें एंड एवरीथिंग? वी हैव अ प्रॉब्लम हियर. ऑल इंस्टीट्यूट्स, मोस्ट ऑफ द have problems of getting attractive faculties which are good and experienced, because good professionals are so highly paid in private sector that they are normally not inclined toward teaching. True. So we have this problem of having faculties. True. We are short of faculties in all the colleges that we have. That is so true. कि मतलब we don't pay actual people who are shaping the future. Right. Yeah, so that is a negative thing on our part. Yes. बिल्कुल. सर मैं आपसे अगर प्रोफेशनली पूछूं कि when we study in everything and when we enter the career या प्रोफेशनल फील्ड को एंटर करते हैं, तो एक क्लैश आता है. आप सारा लॉजिकल और थ्योरी पढ़ते आ रहे हो एंड देन यू आर वर्किंग ऑन डिज़ाइन और क्रिएटिव्स, और जब आप प्रैक्टिकल उस पर लाइफ में आते हो, किसी फर्म का पार्ट बनते हो, तो आपको ना बहुत सारा कुछ क्लाइंट्स की डिमांड्स पे करना पड़ता है या वो करना पड़ता है विच यू आर नॉट इंक्लाइंड टू डू. ठीक है, तो इसके बीच में बैलेंस कैसे होता है? जो फंक्शनैलिटी है और जो आपका आर्टिस्टिक या क्रिएटिव विजन है, उन दोनों के बीच प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, उनके पीछे कैसे बैलेंस किया जाए? That is a real problem. We have difficulties of balancing the two. Yeah. One is the commercial demand, which is there, and the other is your professional standards. Yeah. So many a time for people like us, it becomes very difficult to cope with that. We have to deliver things which we do not believe in, and that is commercialism. That's one of the ills of commercialism, that it demands you to work which is not from your heart. But that is sad, but that is how it is.
ये तो बात ठीक है, जब कमर्शलिज्म पे बात आती है तो ये तो बिल्कुल वो वाज़ेह एक चीज़ हो जाती है कि यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स जो आप नहीं, मतलब जो आपका डिज़ाइन और क्रिएटिव माइंड कुछ और कह रहा होता है। जब हम पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन सर्विसेज पे आते हैं तब भी ऐसे अक्सर औकात होता है कि यू लाइक समथिंग एल्स या आपका स्टाइल कुछ और है और जो क्लाइंट है दे आर आस्किंग फॉर समथिंग दैट यू डोंट या यू डिसलाइक, आप कहते हो कि यार नहीं ये दिस इज़ वेरी टिपिकल। जैसे हम बात करें कि वो सारा इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, एक जैसे घर बना रहे हैं, तो वो किसको समझने की ज़रूरत है, या क्लाइंट को, या आप कैसे समझाओ कि भाई दिस इज़ गुड फॉर यू एंड दिस इज़ बैड। मतलब हमारे जो नए स्टूडेंट्स आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कम्युनिकेट नहीं करना आता है क्लाइंट को, एंड दे डोंट हैव इनफ बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, इतना नहीं होता है कि वो अपने काम के थ्रू जो है कन्विंस कर लें अगले को, तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए? It was job educating your clients. Yeah. And if you are a heavyweight professional and you have an impact of your work, then the client gives you respect at times and listens to you. But especially for the youngsters, there is a problem because the clients push their ideas in. But the professional should have a lot of character, to the extent that he should refuse a job if he finds that doing that in that manner will create a bad sort of a design, bad product. All right. सर आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया था एंड यू मैच्योर्ड अ फ्रेंडशिप विद शाकिर अली सर, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल थे एनसीए के, और फिर शाकिर अली हाउस आपने डिज़ाइन किया था और नाउ इट्स नोन एज शाकिर अली म्यूजियम। तो ये जो एक चीज़ होती है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना करियर में और प्रोफेशन में, इसकी कितनी अहमियत है? क्योंकि अब तो इतने प्रोफेशनल हो गए हैं लोग कि नाउ वी डोंट, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ game of numbers. Yeah. Okay, in our times, the number of students and teacher की जो relationship थी, there were the students were not like today. We have an average class of 70 to 80 students, and teaching, lecturing is fine to 80 students, but instructions, delivering instructions to 80 students becomes almost impossible. If you devote only 5 minutes, 5 into 80 becomes 400 minutes. So, like teaching drawing, you just can't lecture. So, in these fields of art and design, there's a problem. And even in College of Arts, now the number of class students is so large that it's a huge problem to be able to communicate at a personalized sort of a communication between students and teachers does not exist anymore. That's true and that's a loss. That's a great loss. और यही चीज़ अगर हम करियर में बात करें, मतलब आप एक क्लाइंट का काम करते हो and you build a relationship actually, ठीक है, then they start coming back to you. तो ये चीज़ करियर में कितना इम्पोर्टेंस, मतलब कितनी इम्पोर्टेंस रखती है ये चीज़, that you build a relationship with your client, क्या फिर ज़रूरी नहीं है, there is a limit, आपका वो होना चाहिए gap. हाँ, this again, you know, the enterprise of the market has its own impact on the work that you are producing, and the conditions of our professional relationships are not really all that bright. Hopefully we should in future be able to solve this and have a better relationship between, and commercialism should not be dictating everything, because the quality of our urban environment and our cities depends on how good is the output of professionals. True. That is true. सर मैं आपसे एक और चीज़ है, मैं किसी से नहीं पूछती, लेकिन मैं बीइंग फ्रॉम द सिमिलर फील्ड इंटीरियर डिज़ाइन की, मैं आपसे एक पर्सनल, मतलब आई एम अ मॉम ऑफ 2, मदर ऑफ 2, ठीक है, आई एम ऑल्सो अ हाउस वाइफ एंड आई ऑल्सो वांट टू वर्क। आपको पता है आजकल हमारी जनरेशन का ना एक बड़ा मसला है कि हमने काम भी करना है और बच्चे और शादी भी, सारा कुछ साथ साथ चलता है। मैं अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए या फिर
प्रोफेशनली ज़रा सक्सेसफुल होने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपसे एक एडवाइस अपने लिए मांगना चाह रही हूँ. मेरे ख्याल again I will point out to the advantage of the modern technology. And if you have a laptop and you have information, so you can actually do a hell of a lot of work sitting at home. And working from the office has been reduced after COVID anyway. Yes. And now yes, they that find is good. that it is not such a bad system. Yeah. They were forced into it, but they find it very suitable Yeah. and very economical. True. So maybe that sort of a thing could be helpful for people like you. Thank you so much, sir. Thank you so much. It's an honor. Thank you so much for listening, and this interview holds a very special place in my heart, and I hope कि जो आजकल अभी बच्चे जा रहे हैं and everything, हम इनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें. और जो इनसाइट्स थी माशाल्लाह मतलब इतने एक्सपीरियंस हैं, वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने पाकिस्तान के कल्चरल डिज़ाइन और आर्ट को जो है वो थोड़ा इस्टेब्लिश किया था, एंड दे मेड इट ईजी फॉर अस. थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस. और आप लोगों ने ये लाजमी वीडियो शेयर करनी है. आई मीन दिस इंटरव्यू इज़ ऑन अनदर लेवल. अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें और उस चीज़ की बात करें कि इन्होंने फाउंडेशन बिल्ड की थी इस चीज़ की, और नाउ दे हैव मेड इट ईजियर, और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकग्निशन हो रही है पाकिस्तान की, वी नीड मोर पीपल लाइक हिम. तो आप लोगों ने ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, एंड कॉमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. And don't forget to like and share the video. Till next video, Allah Hafiz, bye.